Hello everyone. How's it going? Welcome to another episode of Is It Necessary? And today I have मेरी बचपन की friend with me, Miss Marisha Thakur. And Marisha पिछले 5 साल से अपनी घिसा रही है and finally अब lawyer बन चुकी है वो almost at the end job भी मिल चुकी है. So today we are going to talk about her entire journey कि उसके दिमाग में lawyer बनने का thought कहाँ से आया to actually landing a job. So if you are an aspirant or like want to get into NLUs or something, this is the podcast you have to watch till the end or listen till the end. So, Marisha, like, why don't you just introduce yourself? Just tell the audience a little bit about you. Yeah, that sounds like an HR question, but I'm used to it now. I've practiced this about like 15 times before my job interview. Nice. तो एकदम nail होना चाहिए, ठीक है? Certainly putting pressure on you. Get the job. Let's see if I get the job this time. So, yeah, hi, I'm Marisha, and I study in Gujarat National Law University, which is situated in Gujarat and in the capital of Gandhinagar. So, yeah, I mean, I don't know, a lot of people may assume otherwise. Lovely professional university नहीं पता ना लोगों का है. हाँ, but नाम में स्टेट का तो नहीं है ना. गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात पे नहीं होगी तो कहाँ होगी? नहीं. There are places जहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी रख रखा है, but anyway, doesn't matter. Mumbai College. Anyway, so coming back to the point. Wow, you're really terrible HR, Kaushal. मैं तो कुछ बोला भी नहीं लिटरली. आई हैव वेटिंग कि हाँ अभी एक अच्छा सा इंट्रो देगी अपने बारे में. बट यार से गुजरात यूनिवर्सिटी इज इन गुजरात. वो ज्यादा फोकस कर रही है. Gujarat National University is the only national university in Gujarat. Maharashtra National Law University. There are two MNLUs actually. Marisha, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर. सुन मेरी बात. हाँ, इसलिए बोल रही थी मैं. बीच में मत बोल. ठीक है, fine. Can I? Please go ahead. Yeah. So I study in Gujarat National University, which is GNLU, and I have 2 months left to graduate. And I don't know. Let's hope I graduate. And this has been a really it's been a ride basically. Law school has always been a ride. It will always be, and just a lot to learn socially and intellectually. I would say intellectually stimulating. I'm not sure if I've learned a lot intellectually. But stimulate both of you. Yeah, let's leave out the innuendos here. But coming back to the point, I did not actually want to be a lawyer to begin with. That was one of my options. Okay. Okay, let's just like get back to the start. Imagine तूने अभी 10th खत्म किया है और अब तेरे को 3 streams दिख रही है, science, commerce and arts. So अभी तेरे दिमाग में क्या thoughts चल रहे हैं? Law का थोड़ा भी thought है या फिर like कुछ और ही है? Just one of them. Yeah, I wanted to do humanities. मतलब liberal arts तो करना ही था. And so I wanted to basically get into either journalism, and then or later on it was law. My first preference was psychology. 11th, 12th, my entire CV looked like it. I actually like interacting with people. I like getting to know them, just professionally. So I thought law was like a perfect amalgamation. But let me be very honest. पापा ने बोला psychology में कुछ नहीं रखा है. Professional degree कर ले. तो मैंने बोला ठीक है. One of the options is law, तो कर लेते हैं. अच्छा, so basically पापा ने बोला कि psychology नहीं करनी चाहिए, इसलिए you skipped that and law में घुस गई because that was the only option. Yeah, I had 3 options. Yeah, so it was psychology, journalism, and law. And law is the most stable one of the options. No, law being one of the options was that, you know, you do get to learn something new in every semester. I wanted something that would not bore me out over a long run if it's not my first preference. So that was how I got into it. Okay, so before you got into law, like तेरे दिमाग में thoughts क्या थे कि like college कैसे होने वाली है? How will the law degree be? Like, did you have any preconceived notions in your head कि ऐसा होगा life? Well, from what I'd heard, जैसे हर NLU aspirant सुनता है कि you know it's going to be really cool. We're going to land a corporate job और अलग ही suits के fantasy चल रहे होते हैं. But मेरे लिए ऐसा कुछ था नहीं. When I was giving class, मुझे लगा कि यार एक ऐसा पेपर है. What the college presented
itself as and what the paper is two different things altogether. So the CLAT is generally, it's an overview like English, legal aptitude, GK, सब test कर रहा होता है. Okay. But when you get into it, it's different. Okay, तो रियलिटी कैसी थी? लाइक सबसे पहला लाइक तेको मेजर शॉक या वैसा क्या मिला कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसी दुनिया होगी? Well, I would say सबसे बड़ा culture shock लगा मुझे because मैं सिंगापुर से इंडिया आई थी and I assumed that if you're studying in one of the top law colleges of this country, then people would be more receptive towards things. So मेरा जो ideal college का जो था, that was I would go to a college, I'll talk to everyone, I'll have intellectually stimulating discussions, blah blah blah, but everybody was just kids, right out of college, right out of school. 12th standard के बाद में सीधा आ गए बस. तो तेको क्या लगा? तो व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग कि सारे बिग शॉट लोग होंगे, लाइक एकदम मॉक ट्रायल्स वगैरह वगैरह सब कुछ स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगी? मिलॉर्ड? No, I thought काफी well read individuals होंगे, but a lot of kids had just come. Not really, a lot of them, yeah. छपरी तो नहीं बोलूंगी, I don't think that's the correct word, but बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए थे जिनको लॉ करना ही नहीं था. इंजीनियरिंग नहीं हुई, उसके बाद में सोचा क्लैट दे देता है, ठीक है. फिर उसके बाद में कुछ लोग के मेडिसिन, नीट का पेपर नहीं निकला तो ठीक है, क्लैट दे देता है. एंड क्लैट वाज रिलेटिवली न्यू इन 2017, मतलब around 70,000 kids did that. Okay. So yeah, that's why it was like a new thing for everybody. And secondly, मेरा सबसे बड़ा मुझे शॉक लगा, it was the way the curriculum was designed. Okay. Yeah. The curriculum was designed extremely corporate like. मेरे लिए सबसे बड़ा शॉक था. मैंने BA LLB ऑनर्स लिया था. I took BA because मुझे था एलिमेंट तो कुछ तो आएगा, मतलब कुछ आर्ट्स आएगा. हाँ, थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाने को मिलेगी. भाई इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ गया मुझे. I did not know anything. Yeah. So that was one. So so like अगर if suppose like some kid has just landed in first year, so like do you have any advices for that person के law school में ऐसे you can deal with, तो तेरी life थोड़ी सी easy हो जाएगी, और like these are the things you should take care of? Well, I would say be very cautious of people who you're interacting with, क्योंकि उनको भी नहीं पता क्या हो रहा है, first of all. And secondly, अपने academics संभालो starting से, ठीक है. मतलब that is one thing. कोई एक senior को पकड़ लो जो तुम्हें बता दे कि आगे कैसे निकालें, क्योंकि हर semester same ही है. There is a certain pattern to it. You need to write your papers a certain way. You need to do your projects a certain way. Okay. So that is one thing that. And it's not rocket science. लोगों को लगता है that it's really hard scoring in law school, but it isn't. The only hard part is you have to write humongous answers during exams. So practice that. Practice writing में भी कि speed slow नहीं होनी चाहिए. मेरे कितने papers ऐसे ही छोटे आराम से लिखते. Exactly. That's there. मतलब बहुत सारे जो मैंने बोला ना, engineering kids, medicine kids, उनको यही दिक्कत हो रही थी कि मतलब पेपर कैसे लिखे हैं. वही, because there is so much information to write and you first have to decide कि relevant क्या होगा, सामने जो checker होगा वो कैसे देखेगा वगैरह ना. And I don't think I'm very eligible to give out academic advice, क्योंकि मेरा ऐसा था अभी तक पास सही हुई है. नहीं, बात ही नहीं, मैं ऐसे टॉपर तो थी नहीं, ठीक है, नहीं हूँ. But my main thing was that I've read about history, I've read the background on things. So when you're writing an answer, you can actually formulate it very well. वैसे तो case studies देते हैं, तो you need to have the background information somewhere. तो अगर आपको कुछ पता है पहले से, if you're reading, so you can incorporate that into your answers. So that helped me. मतलब real life examples वगैरह से ही like सीख के you can add to your papers. ऐसे जरूरी नहीं कि everything should be theoretical. Real life examples, yeah, that's true. Or like if you are an avid reader or something, you can always analyze it. मतलब the papers are designed as such that you can explore different aspects. But of course, आपको law तो पढ़ना ही पड़ेगा. You need to study the sections, the articles. So yeah, everything else aside. Okay, I always had this curiosity कि mostly लोग corporate lawyers क्यों बनते हैं, like criminal lawyers इतने कम क्यों होते हैं? Like जिसको भी पूछो सब लोग corporate में inclined है क्योंकि पैसे ज़्यादा है.
Not really. There are multiple aspects to it. Of course, the money aspect is there. Yeah. But जैसे I'm a first generation lawyer, ठीक है? My father is not into litigation. We don't have chambers. Yeah. तो अगर मुझे litigate करना है, तो मुझे almost मतलब 5-6 साल तो मैं मान के चलूं कि I will have to first work under a lawyer, an already established lawyer, and then gain experience and then establish my chambers. So it's very difficult for a first generation lawyer to say make a mark without passion for law. I'm not saying I don't like law, but I'm not as passionate to be say Jethmalani, you know. तो होता है ना कि there is a fire कि हाँ चलो ठीक है मुझे केसेस लड़ने हैं मतलब बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि मैं कोर्ट में केस लड़ूंगी ठीक है वो होना चाहिए अंदर to actually go into litigation because it's extremely difficult. Okay, so तेरे को सेटलमेंट करने में ज्यादा मजा आती है? You mean arbitration, mediation? हाँ मतलब मैंने सूट्स में तो लेट्स सेटल यही सुना है कोर्ट. Well, that's a part of being in a law firm. लेकिन वो usually seniors करते हैं in a law firm. जो हम करेंगे वो तो we're initially just like A0 associates ठीक है तो. Yeah, but you didn't answer my question कि लोग criminal में क्यों नहीं घुसते? Yeah, I got into it. हाँ तो criminal के अंदर घुस सकते हैं but again that has a lot to do with litigation. You have to have either a background first कि you know if your father has been a lawyer, chambers हैं उनके already, you have a client base, तो आप you know criminal में घुस सकते हो. But then if you do not have that, then it's very difficult to establish on your own. Okay. And लोग नहीं कर पाते वो मतलब until unless they don't have that passion, that zeal कि हाँ करना ही है ये तो. हाँ कि criminals को ठिकाने लगाना ही है. That's why they get into. That's true. And plus, not to get into the political aspect of this, but थोड़ा सा बताऊंगी कि it is difficult to be a criminal lawyer in India. It is without a backing, without a political backing. At the end of the day, अगर मैं public prosecutor भी बनती हूँ, तो भी मेरे लिए बहुत difficult है because I might get death threats or whatever. हाँ, and actually काट के फेंक देंगे. काफी लोग के साथ हुआ भी है ना, होता ही होगा. Yeah, that's true. I mean, an example is that movie Shahid. Yeah, I have not seen, but yeah. Yeah. Okay. Whoever's watching, watch it maybe if you are interested. If you want to know about the actual reality of law, India में तो watch Shahid, right? I wouldn't put it that way. I wouldn't. Then what suits? I wouldn't. Because that is exactly how law works. What suits? What suits? That is exactly how a corporate firm is supposed to work. In an ideal world. Yeah. No, not really. India में भी होता है? Suits में exactly वही hierarchy में दिखाते हैं. Suits में जो आपको दिखा रहे हैं वो actually partners दिखा रहे हैं, like the top of the hierarchy of the corporate firm. तो ऐसा ही होता है. That is how they actually end up dealing. इतने ही पैसे मिल रहे होते हैं and उतना ही exciting होता है, but वहां तक पहुंचने के लिए बहुत घिसाना पड़ता है, बहुत ज्यादा. Yeah, obviously, unless you are like awesomely gifted like Harvey or Mike, तो बात अलग है. Mike कितना जल्दी पहुंच गया था ऊपर. That is correct, yes. Also, fun fact for our listeners, a long time ago, me and Marisha actually recorded a क्या बोलते हैं reaction on Suits का first episode, जो आज तक सिर्फ मेरे लैपटॉप के हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ. आज तक एडिटेड नहीं है क्योंकि किसी ने एडिट नहीं किया था और उसके बाद 2 साल का ब्रेक भी आ गया. क्या किया गया? कुछ नहीं, never mind. Let's move on. I just wanted to give that fun fact to our listeners कि 2 साल से हमने पहले रिकॉर्ड करना शुरू किया था, तो आज like we are finally recording something nice. I'm sure they're not interested. ठीक है. हाँ मतलब कोई तो रेगुलर लिसनर होगा for that person. नहीं तो जय ही सुन लेगा, उतना काफी है. ठीक है. Okay, moving on. So like how is the campus life in NLUs, or like how is an ideal day of a law student, if you have to say? क्या होता है सुबह से शाम? Of course, मैं जो भी बोल रही हूँ that is based on my opinions, but I've been to 2 NLUs. So first मैं NLU उड़ीसा गई थी. I was there for about 12 days, and then I filled in the vacancy form and I went to GNLU. So these 2 campus lives are very different. But to give you a baseline, it is a residential program. So, you know,
you have a set time, you have to go to the mess at a set time. Classes के बाद में you're all free, you can interact, you can do whatever, get along with your day. कि अच्छा ठीक है, आपको sports खेलना है तो sports खेलो, if you're a extracurricular person, you can do that. So उसके बाद में hostel is very fun because you can just chill in anybody's room, but then it also can get extremely toxic because you're in that same place and for an entire semester. So लोग आपके business में ज़्यादा घुसते हैं, मतलब at least from what I have seen, जो बाउंड्रीज कम हो top 5 जाती है NLUs काफी ज्यादा, मतलब वो हो ही जाता है eventually, but then my experience from NLU is very different from GNLU. Okay. Because I've been told by my seniors also कि the higher up you go in the NLU hierarchy, the more competitive the environment gets. So competition में it can get negative, it can get socially negative too. So अच्छा, तो ऐसे भाईचारा वाला सीन नहीं है कि चलो भाई साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ में, एक दूसरे को काट काट के आगे जाना है? ऐसा कुछ एनएलयूज में है, डेफिनेटली है. मतलब I'll tell you, जैसे one of my friends from this other NLU Jodhpur, she was telling me that फर्स्ट सेमेस्टर में उनका मूट कोर्ट कंपटीशन होता है, ठीक है, इट्स अ मॉक ट्रायल. और तो लोग लिटरली नोट्स वगैरह छुपा रहे थे, बुक में से वो पेपर फाड़ के अपने पास में छुपा रहे थे, so that the other person doesn't get that piece of information जो उनके पास में है. Yeah, so it was, मतलब ना, I'm sure people must have grown out of it. I think ये तो अलग हो गया ना, मतलब ये तो like sabotaging तो नहीं बोल सकते इसको, but it's like कि खुद का जीतना ज्यादा important है, like exactly. You only care about winning, not the way. Yeah. So the thing is, most kids who come from CLAT, who clear CLAT, वो क्या है कि at the top of their school academic game रहे हुए होते हैं, या फिर school में भी वो they've been the center of attention or whatever. Now यहाँ पे आते उनको realize होता है कि oh shit, I have to compete with these people who were at the top of their game. So there is like a psychological insecurity and constantly, you have to be friends with them also, but आपको you have to swallow the hard pill कि they're also as smart as I am. So I think that's what is a problem. That is what has been a problem. मतलब also मैं क्या बोलूँ. And ये GNLU में ऐसा नहीं है क्या? ये ऐसा ही है? From what I've seen है, but over the years वो कम हो जाता है, मतलब as you sort of end up. मतलब राइवल्स भी फ्रेंड्स बन जाते if you like spend a lot of time with that person, and तुम लोग तो 5 साल साथ में रहते हो तो हो ही जाता होगा obviously. Initially competition ज्यादा होगी ना? Actually, it's not about being a friend. Over the years, लोगों को realize हो जाता है कि it's a college. School नहीं बचा है. मतलब college में तो यही होता है ना कि you're supposed to thrive on your capabilities. You're supposed to work on yourself. Right. You're here to grow. Yeah, यहाँ पे कोई topper या फिर first ranker, second ranker, nobody cares. होता है, but most people don't care. Exactly, क्योंकि बाद में जो प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठना है तब 60% वाले को भी उतनी प्रायोरिटी मिलेगी जितने फर्स्ट रैंकर को मिलने वाली है. So एटलीस्ट इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में कट ऑफ 60% होता है तो उसके ऊपर लाइक सब लोग को इक्वली ट्रीट करता है. या मतलब मैं इसका एग्जैक्टली वैसा नहीं बोलूंगी. जैसे टॉप फर्म्स हैं, देयर आर 2 फर्म्स, दे नीड गुड ग्रेड्स. मतलब दे एक्चुअली नीड यू टू बी टॉप 20, टॉप 10 इन योर बैच, एंड हर बैच में अबाउट 180 किड्स हैं, सो यू कैन जस्ट सी कितना. ओके, बाकी ठीक है, यू विल गेट प्लेस्ड. बट वही है जो लाइक एकदम क्रीम वाली कंपनीज है, उधर नहीं होगा, उसके लिए कंपटीशन करना ही पड़ता होगा. Exactly. So like throughout your entire journey, intern. So throughout your entire journey of like 5 years, तेरे को realize हुआ अपने बारे में कि like what kind of lawyer I want to be or how I will be compared to others, like ये qualities मुझ में अलग है compared to like an average lawyer. Was there any like revealing thoughts in your head? I would say we're not lawyers yet, but एक चीज पता थी कि but in terms of qualities, yeah, some things come naturally to me, some things come naturally to other people. So I think the researching aspect या जो भी है, मैंने इतने moods किए नहीं है. मैंने
research papers भी ज़्यादा नहीं लिखे, but when I actually interned, I could do well, you know, in research as compared to, yeah, research say comes not naturally, but अगर you know if I really focus, then I end up doing it fine. Yeah. And for an instance, when it comes to even talking, there was an instance जैसे मैं intern कर रही थी तो client counseling होती है. Do you know what client counseling? Of course you do. So there was a woman who came and बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मतलब cases बता रही थी, and मेरे साथ में एक junior associate बैठे थे, उनको shadow कर रही थी मैं. So this woman was just talking for 4 hours, and junior associate ऐसा हो गया था, मतलब अरे भाई बोलना कब बंद करेगी. And I was very enthused कि हाँ भाई बताओ problem सुनूंगी मैं, ठीक है. तो छोटे-छोटे चीजों पे notes लिख के बनाऊंगी. So basically you are a good listener. I was doing it. He was like भाई तो कर ले. Yeah, so client counseling, which is very important to be a lawyer. So that does come naturally to me. So I guess ये दो चीजें हैं. So क्या ऐसे भी lawyers होते हैं जो clients की सुनते नहीं है, like थोड़े से में वो लोग अपने दिमाग से image बना लेते हैं and like that's how they proceed with this. ऐसे भी होते हैं lawyers? I think only the junior ones. Eventually they do realize, they sort of get better at it. हाँ, like if you are fighting a case for a client, then उनकी बात तो पूरी जाननी सबसे ज़्यादा important होगी, तो भी लोग ignore कर देते हैं. I mean, I would say कि वो skill develop करता है. ऐसा नहीं है कि वो सुनना नहीं चाहते, but I think it's about attention span also. कि कई लोगों को ये चीज realize नहीं होती कि empathy कितनी important है. भले fake empathy, but see, most lawyers need to cultivate fake empathy. ठीक है? You might not be a sensitive person at all. मान लेते हैं मुझे practice करना है. As you said, criminal lawyer बनने के लिए या फिर मुझे खुद की practice establish करने के लिए fake empathy तो दिखानी पड़ेगी. You need to act like listening to the person at least. So वो चीज लोगों को cultivate करनी पड़ती है. मतलब basically manipulator बनना है. That is not really. That's not. No, fake empathy is like a major part of manipulation. ठीक है, like one of the most prominent things if you think about it. We'll need to make a different video for that. I have my debates. ठीक है, क्योंकि actually I have been lately listening to an audiobook related to manipulation, और उसमें इसका point काफी अच्छे से दिया हुआ था कि like in order to manipulate someone you first have to understand what they want and then you present in a way that they want it. So तुम्हारे ulterior motives fulfill होते हैं but in a way कि सामने वाले को लगेगा कि उनके हो रहे हैं. So that is like summarized. Empathy could be the stepping stone, but that doesn't necessarily mean कि मैं manipulate करना चाह रही हूँ. No, I'm not talking about you. I'm just talking. You said ना कि fake empathy करना. नहीं, exactly. In general, मतलब there could be a good lawyer, bad lawyer, whatever. Now, in baseline में यही है, उनको manipulate भी करना है तो understand तो करना ही पड़ेगा. Okay. So now tell us a little bit about your job. के exactly तेरा role क्या होगा once you start working? कि like ये entry level jobs, like people will get an idea कि like out of law school, what type of jobs do people get generally? Okay. So I want to become a corporate lawyer. Okay, that's at least my goal for a while. And sorry. Yeah, go on. Yeah. So my job would mostly include researching. जो तेरी strength है. Proofreading. Research तो आपको करना ही पड़ेगा. It's the basic. You get into law, आपको research नहीं आती. Why you even in it? You know. So researching, drafting, proofreading, and उसके आगे I cannot say because जितना मैंने intern किया है, internship से मुझे इतना ही पता चला है कि this is my job because जहाँ पे मैं intern कर रही थी, I ended up getting a job there. So from what I could see, मैं जिन associates को shadow कर रही थी, वो ये कर रहे थे. फिर presentation is very important. वहाँ पे कुछ monthly presentations होते हैं because law gets updated, right? Especially companies law या फिर banking law, इनके बार-बार circulars आते रहते हैं. So you need to be updated on that and sometimes also need to give a presentation. So I would, from what I can tell right now, ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे. Rest, let's see. Okay, so now tell us a bit about your future. Okay, like तेरे दिमाग में भी roadmap क्या है तेरे future? Like what exactly is your plan down the line?
Well, for a while I want to work in this corporate setting, and wow, this is such an HR question. I literally got asked this, कि अच्छा, so where do you see yourself? हाँ, but don't give me that HR वाला आंसर. I need the honest answer. So because मुझे थोड़ा सा हिंट है कि तेरा क्या आंसर है, but I don't know if your mind has changed now or not. Yeah, the thing is that there are a lot of things in my head for now, but then क्या है कि I cannot tell right now, क्योंकि अभी मैंने काम करना शुरू भी नहीं किया है. ऐसे जो मैंने लास्ट सेमेस्टर सोचा था, that was very different from now, क्योंकि अब क्या है कि properly like it's starting in real time. अभी webinars वगैरह शुरू होने वाले हैं, where proper associates will talk to us about things. So अब I am not able to function right now. कि अब तो ऐसा हो गया है कि हाँ ठीक है, शायद 2 साल बाद में मैं LLM करूँ या नहीं करूँ, but LLM करने के लिए भी I have to really really like a law subject, क्योंकि it's specialization at the end of the day. 2 साल आप वही पढ़ रहे हो. Okay. So that is. So बीच में जो तुमने कुछ दूसरी फील्ड के बारे में बताया था, वो प्लान ड्रॉप कर दिया पूरा? For a bit, yeah. I've had a lot of differing opinions on it. तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है. थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है कि मतलब ऐसे लोगों को मैंने बहुत सारे साल बर्बाद करते हुए देखा है. So, yeah. Do you want to tell the people के नहीं? यार. Okay, never mind. Let's move on. It's okay. It's okay. हाँ. I think अगर हमारी कोई स्मार्ट ऑडियंस होगी तो इतने भी उनको हिंट मिल गई होगी. Let us know in the comments what do you think Marisha is talking about. Yeah, sorry, I cannot reveal certain things. Yeah. Anyways, so like apart from that, what do you feel about like the teachers and everyone? कि क्या वो लोग भी एकदम like top notch lawyers होते हैं जो रिटायर होकर टीचर बन जाते हैं, या फिर like काफी लोग out of ये कॉलेज भी होते हैं जो टीचर बन जाते हैं? I mean the people who are like training you, are they like valuable? क्योंकि मेरी बहुत खच्चू कॉलेज थी, तो मेरे तो सारे टीचर्स भी छप रही थे कि उनसे ज्यादा तो काफी स्टूडेंट्स को पता होता था. So what was the scene there? Damn, okay. No, see, the baseline of becoming a professor or a lecturer in any NLU is that you have to be, if you want to be a professor, you have to be a PhD first. Okay. तो PhD के बिना तो नहीं बन रहा. मतलब 5 साल के ऊपर और 5 साल. या तो PhD तो आपको होना ही पड़ेगा. फिर अगर आपको एक लेक्चरर बनना है तो आपको LLM तो करनी पड़ेगी. तो उन लोगों ने डेफिनेटली 7 साल की पढ़ाई तो करी है. ठीक है. हाँ, और उसके बाद में उन्होंने they have been assistants under professors also. तो it's a lot of experience, बहुत सारा experience involved है. तो I wouldn't say कि ऐसा कोई professor है जो experience lack कर रहा है, knowledge lack कर रहा है, but हाँ, at the end of the day I would be wrong in saying कि सारे teachers अच्छे हैं, because at the end of the day teaching तो आपको differ कर सकती है. मतलब मुझे जो समझ आ रहा है वो तुझे नहीं आएगा, वैसी वाली चीज है. So I would say in terms of teaching probably certain subjects could be better. मतलब जैसे कुछ जो subjects है जो बहुत important है, जो एकदम base है, for instance constitution law, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा. So those sort of professors need to be really good. So अगर वो नहीं है then it's probably an issue. But मेरे कॉलेज में तो ऐसा है कि most of the professors are well read and everything, but by teaching is communication, knowledge is up here, so difference आ जाता है काफी ज़्यादा. हाँ, knowledge को communicate करने में problems आ सकती है, like सबकी styles अलग होती है, as you mentioned. Definitely. Okay. You know one thing, like because you mentioned constitution, उससे मेरे को याद आया, तो like when I was in like 8th 9th standard, तब मैं consider कर रहा था actually lawyer बनना, and like people around me also used to say कि if you're good at debating, like तू लड़ाई कर लेता. Mostly तो मेरी wife बोलती थी. So they are like naturally तो lawyer बन सकता है if you're good at debating, and like you can find many problems and like छोटे points which I can use in my own defense. But then मैंने 9th 10th स्टैंडर्ड में civics पढ़ा और मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता था. मैं लिटरली SST पास हुआ था बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. civics barely बॉर्डर से निकला हूँ मैं. तो लाइक नहीं, civics नहीं हो रहा तो लॉ का प्लान ड्रॉप अभी. नहीं यार, civics is a very small part of it. मुझे बन जाना चाहिए ऐसा, but no अभी. अरे मुझसे 9th 10th में संभल नहीं रहा था, आगे कैसे संभलता civics. यार इससे मुझे एक इंस्टेंस याद आया. I was recently talking to a friend's brother, ठीक है, and he was telling me about this.
या so I was talking to him and उसी ने मुझे बताया और तब मुझे एक पर्सपेक्टिव मिला कि you know this thing you were saying कि बचपन में जो बच्चे होते हैं ना जो बहुत आर्गुमेंटेटिव और लॉजिकल इन वन सेंस या जो झगड़ालू होते हैं बेसिकली उनको बोल देते हैं कि हाँ मतलब तुम लॉयर बन सकते हो, ये वकील बनेगा, ये वकील बनेगा, एंड वही बच्चे बड़े होके मान लेते हैं उनमें से 50% ऑफ देम आर जस्ट लाइक हाँ हम वकील बने और बन भी जाते हैं. एंड उसके बाद में यही माइंडसेट लेके वो आते हैं लॉ स्कूल में, ठीक है, कि हम सबसे झगड़ेंगे और लॉजिक से सबको प्रूव करेंगे. हाँ so you can imagine the kind of the social environment that is created initially. जब तक लोगों को ये रियलिटी हिट नहीं होती कि सब यहाँ पे ऐसे ही है. मतलब so he was telling me, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार मतलब maybe this is why law colleges are very different from other colleges. मतलब I of course have friends in other colleges too and वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, लोग chill हैं. यहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है ना कि it's like a consistent intellectual war. हाँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बचपन से इंड्यूस किया होता है कि तू लॉयर बनेगा, तो उन लोग को लगता है दिस इज मेड फॉर मी, दिस इज माय शिट, हाउ कैन समवन एल्स बीट मी एट माय शिट. वही ना. हाँ, उनको लगता है बस हम तो जेठमलानी है, सबको लगता है हम जेठमलानी है. इनिशियली सबको ये लगता है, जिनको एक्चुअली लॉयर बनना है उनको ये लगता है कि हाँ हम तो जेठमलानी है. बाकी सब ऐसे फिगर आउट करते हुए रह जाते हैं कि अरे शिट अब क्या करें, अब तो आ गए. हाँ, another thing, so इससे like मेरे को आ रहा है दिमाग में कि how do introverts deal with this? वो लोग क्या रिसर्च और like back of the scene वाले काम में ज्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं like compared to like actually doing trials and like talking in front of all? That's actually a very good question, but मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी. Being an introvert does not mean you can't be a good communicator. So so being an introvert does not of course mean that you can't be a great oralist जो mocks में या debates में जरूरी होता है. So and in fact मैंने बहुत सारे introverts को बहुत अच्छे से argument formulate करते हुए देखा rather than extroverts. Extroverts tend to get extremely aggressive and spontaneous. So that can be so वो like you के disadvantage में use हो जाता है. I'm not an extrovert actually. अच्छा, ambivert बन गई अब? Not really. I've always been an introvert, but you have never been an introvert. मेरे को एक बार लाइफ में नहीं लगी तू introverted. तुझे नहीं लगा ना, but at the same time, like if I actually were to tell you personality traits, then you would say, yeah, you're an introvert. But at the same time, I don't mind talking to new people. First of all, लेकिन वो मेरा एक baseline आ जाता है. वहाँ तक बात करूँगी जहाँ तक काम है. Because I think I probably cultivated it. इतनी schools बदल ली, तो एक बात करना आ गया मुझे. But I don't prefer it. I really don't prefer it. People drain me. Okay, I think I feel the same, but overall I am an extroverted. मेरा भी like social tolerance बहुत कम है. I would talk really nice to the people I like, but I don't know, like overall traits भी तो होते हैं ना. If you remember MBTI and all, although like I've stopped believing in that now. तू ENFP थी ना? नहीं, मैं INFJ थी. तो INFJ तो अभी बनी, like recently when you told me. Yeah, it's been a year, dude. हाँ, then ENFP I guess 2-3 साल पहले की बात है. हाँ, मैं उस टाइम चीजों से डील भी कर रही थी, तो I don't trust that. I wasn't in the best headspace, so yeah, don't trust that. हाँ, yeah. So एक तो तूने मेरे को ये बता दिया कि competition fucks with people's head a lot. Apart from that, और कुछ issues आते हैं like which affects people's mental health in during the law school? Of course. मतलब ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली जब मैं second third year में थी, that a lot of people are dealing with mental issues like depression, anxiety. बहुत सारे लोगों को panic attacks आ रहे हैं and they have to mask it. मतलब ये जो जितना भी हुआ है ना कि अच्छा okay talk about it hashtag blah blah blah, ठीक है. हाँ. People aren't applying it. People aren't applying it. Nobody will feel comfortable enough ना. हाँ, कोई actually acceptance नहीं ला रहा है and that is what I मतलब अगर कोई actually worthwhile लोग देख रहे हैं and if you guys are about to go into law school, so please be kind towards other people. It doesn't fucking matter कि वो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, कितने क्या लग रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें नहीं पता कि वो किस चीज से डील कर रहे हैं. आई डिड नॉट नो सो मेनी पीपल डीलिंग विद इट एंड उनकी वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी बिकॉज ऑफ द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट. यू नो, ऑलरेडी बंदा डिप्रेस्ड है और ऊपर से उसको ये सब देखना पड़ रहा है कि अच्छा ठीक है अब मेरे बारे में कोई ये बोल रहा है, मेरे बारे में वो बोल रहा है. प्लस लड़कों के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज इफ यू आई थिंक इफ मेन क्राई
then it's a taboo or something. ठीक है, मीठा है, whatever. I don't want to use the words, but तुझे भी पता है कि कैसी बकवास कर रहे होते हैं. So I'm definitely going to say कि problems तो बहुत सारी आती हैं, because you're living on your own. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से बाहर निकले ही नहीं है कभी. हाँ, और पहली बार सीधा कैंपस में आ रहे हैं, वो भी एकदम कॉम्पिटिटिव लोगों के साथ में. Exactly. ऊपर से people are coming from all over the country. Yeah. So वो And fitting plus वाला dry भी state भी नहीं है people... कि you can't even drink away your sorrow. Well, that is debatable. जा चाहे वारा क्या ड्राई स्टेट है? नहीं, क्या ड्राई स्टेट है? उसके लिए तो नया वीडियो बना, इज गुजरात एक्चुअली अ ड्राई स्टेट? हाँ. ओके. तो या तो ये इश्यूज भी हैं. फिर ऑफ कोर्स पर्सनालिटी फॉर्मेशन, लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एग्जैक्टली है क्या करना है, तो अलग ही क्राइसिस चल रहा होता है. हाँ वही ना, क्योंकि इफ आई थिंक अबाउट इट कि लाइक इफ आई वाज एग्जांपल, इफ आई वाज अ स्टूडेंट ओवर देयर, सो मैं वही सोच रहा था कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ लॉयर वुड आई बिकम, कि क्या मैं ऐसे ही करूंगा कि लाइक जैसे लाइक आई विल लाइक ट्राई टू सेटल इट आउट ऑफ द कोर्ट, कि लाइक आपस में मांडवली टाइप करके सीन खत्म कर देते हो, लाइक वुड आई ट्राई टू प्रूव द अदर पर्सन रॉन्ग, उसके लिए फिर आई वुड गो द एक्स्ट्रा माइल, क्योंकि काफी लोग ऐसा भी करते हैं ना कि ईगो पे ले लेते हैं चीजें, फिर इवन दो दे रियलाइज दे आर रॉन्ग, फिर भी दे लाइक कीप ड्रैगिंग इट. लाइक देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट. सो like self discovery I think इसमें बहुत ज्यादा important है कि what comes naturally to you and what are your strengths. So yeah, and बात है कि it's very easy to get carried away. Yeah. मतलब अगर आप लॉ स्कूल में हो and you're seeing other people do something, it's very easy to get carried away कि मतलब अच्छा 4 लोग मूड कर रहे हैं, मुझे भी कर लेना चाहिए, भले ही आपको अल्टीमेटली उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, you don't actually want to go into FOMO of course. तो वही सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ आइडेंटिटी होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है. Then I guess कि that applies in every field, के you should at least know about yourself no matter in which field you are, and also as like the advice which Marisha gave a while ago कि you should be kind to others, वो भी शायद हर एक जगह पे अप्लाई होता ही है, कि not just in law schools. हाँ, बाकी लोग में भी तो वही होता है ना, बस like maybe varying levels पे, but it won't hurt you to be kind, so that's a nice thing. That's true. हाँ, but if you're actually going to step into law school, try everything. मतलब that's what I would say. मतलब क्योंकि there is so much to do. There is extracurriculars, there is curriculars. मतलब there's so many things, you know. हाँ, now let's talk about the fun part, which was like your most favorite part of being a law student. Like 5 साल में तेरा सबसे favorite क्या हुआ? I think what was my favorite part of being a law student had lesser to do with being a law student. It had a lot to do with just being in college. I think मेरा तो काफी personal है, क्योंकि I realized that there was an entire community. Oh God, I was talking about theater, Kaushal. I found a really nice community of people जिनको actually theater करना था. I learned a lot. And I realized how much I love theater. मतलब मैं कुछ 10 घंटे एक पॉइंट पे थिएटर को दे रही थी. मतलब there was one semester जब मैं इतना ज्यादा टाइम दे रही थी थिएटर को. हाँ, and फिर बैकलॉग कितना है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं. अच्छा. उस सेमेस्टर तो नहीं. So this semester you were actually doing what you like and सब कुछ सही चल रहा था, तो एग्जाम्स में पास भी हो रही थी, and दूसरे सेमेस्टर में you were just focusing on studies, सब लुढ़क गई. लड़की तो नहीं थी, but I wasn't a very diligent student when it came to attending classes एक point के बाद. मतलब उस टाइम पे थोड़े personal issues भी चल रहे थे मेरे, so I was a bit like sleeping late and my routine was fucked, so lot of things. So attendance की वजह से problem हुई थी ना? Attendance के कारण problem हो सकती थी. Okay, never mind. We'll talk about the fun part. So you were saying about your theater, और क्या हुआ? My theater. Then I was a part of the students activities committee of my college. That was very fun. Organizing events, organizing the annual fest. So that was that. So that was my favorite part of college. And as far as academics is considered, there were a few professors जिनसे मैं काफी ज़्यादा बात करती थी initially. उसके बाद तो हर semester the professors change for different subjects. So they were very nice. I learned a lot from them. So that was that. Cool. So I guess हमने like काफी हर एक चीज कवर कर ली ना. Like is there anything about your experience जो हमने बात नहीं की है?
Do you think we're missing out on something? I don't think so. I don't think so. मुझे तो mainly mental health के बारे में बोलना था कि please just don't be assholes to each other. मतलब मत करो. काफी दर्द से गुजरी है ये. मैं मेरे friends बहुत सारे लोग, you know, I've seen a lot of people go down. Cool. So I think like this is a very, very positive note to end this conversation on. So करे फिर खत्म. Yes, definitely. It was really nice talking to you. Okay, so thank you guys for watching. कर ले तो continue, फिर मैं देता हूँ ending notes. हाँ, और मेरे बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील मत करना कौशल. हाँ, मारिशा ठाकुर, GNLU, गांधीनगर. बात करिए तो वहां जाके मिल लो. Yeah. All right then. Thank you guys for watching or listening. If you're listening to us on Spotify, do subscribe to our YouTube channel, follow us on Spotify. And अगर कोई भी law से related doubts है तो let me know. I'll forward it to Marisha. And like अगर बहुत सारे हो गए then we might even do a part 2 of it. So Marisha has a lot of amazing friends जिनको आना है. So like we'll get them also, and like it will be a nice wholesome scene. So let us know in the comments your thoughts if you agree or disagree with anything that Marisha said. And till then, peace out.